Hello kids, Assalamualaikum. How are you all? I'm good. So, what is happening nowadays? It's raining. It's a rainy season now. So, are you enjoying it, all of you? Hmm? Who says, Mummy, please let me go in the rain? Yes, all of you? Okay. Now, let's come to the topic. We were talking about the living things and non-living things. So, what were the living things? All the things that can eat, they can grow, they can breathe, and they can reproduce, and they can move from one place to another. And what are the non-living things? They cannot move, they cannot breathe, वो छोटे से बड़े नहीं हो जाते, they cannot reproduce, and they cannot move from one place to another. Okay, now what is it? It's a penguin. What is it? It's a penguin. Yes. तो आपको पता है penguin move करता है? And what does it eat? इसका क्या होता है food? Penguins eat fishes, shrimps, and all the seafood which is available in the sea. Na? all the animals which are in the sea, like fishes and prawns, and because it lives in the sea, so it eats the seafood like shrimps and prawns and all small fishes. Okay, now so it is a living thing. Yes. Now, what is this? Okay, it's a dog, baby dog. And what is it called? Puppy. Yay! Puppy. Yay! So, it grows into a bigger size day by day. What does it eat? It drinks milk. It also eats food. Yes, so it is a living thing. And do we need to move it? No. जो असली के puppies होते हैं हम उनको move करते हैं. How many of you have puppies in your house? I can never keep a puppy in my house because I'm too much scared of this. Yes. Okay, so it is a living thing. Yes, and how many of you have? Ooh, what is it? Yes, it's a cat. Fluffy cat. How many of you have such a cat in your house? Okay. So, do you know what does it drink? ये क्या पीती है? It drinks milk and it eats fish and other meats also. Okay, so it can move. हमें इसको move करना पड़ता है? No, it can move on itself. It can walk. How does a cat walk? Okay, and what is the sound of a cat? Meow. Who will tell me? Meow. Yay. So it is a living thing. Yay. And what is it? Can you see? Who will guess? What is the name of this animal? It's a zebra. It's a zebra. Yes, with black and white patches. Okay. What does it eat? इसका क्या खाना होता है? क्या खाता है? It eats grass and it eats leaves and all the green leaves it eats. Okay, so it can move and day by day it will grow into a bigger zebra. In the same way, you are small right now and in some days, after some years, you will become like your teacher. So it is a living thing, yes. Now, what is coming here? Oh, yes, what is this? It's a train engine, yay! It's a train engine. It can move from one place to another, but who moves it? कौन चलाता है इसको? A driver. Who moves it? A driver. It cannot move on itself.
Yes, so does it eat food? No. And does it grow day by day? It becomes bigger than its size? No. So it is a non-living thing. And ooh, beep beep beep. What is it? Yes, it's a car. It's a car. Do you move in the car? You come to school in the car, in the van. And do I have a van here? No, I don't have. Okay, so who moves it? Any driver or your baba or your mama drives it? Yes, it cannot move on itself. खुद से तो नहीं चलती. We have to move it. Does it eat food? No. And does it grow? No. And it never feels hungry. It cannot move from one place to another. So it is a non-living thing. Yay! What is this? It's a truck. It's a truck. And it takes material from one place. Can you see this thing? Yes, it is a material. It is taking from one place and then taking it to another. Okay, it moves like this. But who moves it? A driver. A driver drives a truck, then it can move. And what else? Does it feel hungry? No. And does it reproduce? एक ट्रक में से एक दूसरी ट्रक आ जाती है? No. So it is a non-living thing. Okay, can you see this? What is this? It's a drum. Yes. Who plays it? I have to play it. Yes. Does it eat food? क्या ये खाना खा सकता है? No. It can move? Can it move? No. And does it reproduce? एक ड्रम में इसका कोई बेबी होता है? No. And it cannot move on itself. Does it grow day by day bigger? No. So it is a non-living thing. Yeah. Okay. Yes, students. So now, do you remember what was your home task on Monday? Who will tell me? Yes, reading of the lesson, Am I Alive or Not? Can you see this page in your book? Yes, it is page number 1. Lesson number 1, Am I Alive or Not? All of you take it out. Okay, did you read this? Yes? Now you read it with me. Okay? Let's start. Am I alive or not? We are alive. A chair is not alive. हम जिंदा हैं. We are living things. Chair is not a living thing. It is a non-living thing. Okay. And then we can move. A chair cannot move. हम हिल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, but a chair cannot move from one place to another. Then we eat and we drink. जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? We eat food, we eat our meal, and when we are thirsty, we drink milk, we drink water or anything we like. A chair does not eat or drink. क्या चेयर को भूख लगती है हमारी तरह? कभी आपकी चेयर को भूख लगी? No. अच्छा, क्या आपकी चेयर पानी पीती है? No. Okay, we grow. A chair does not grow. We grow. A chair does not grow. Can you see this? We grow. A chair does not grow. We breathe. A chair does not breathe. We sleep. A chair does not sleep. हम ग्रो करते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं. 2 years के बाद आप और बिग हो जाएंगे. आप आज वन क्लास में हैं. आफ्टर 2 years you will be in class 3.
एंड देन जो हमारी चेयर है वो उतनी ही रहेगी. आफ्टर 2 years यू विल सी द सेम चेयर इन द सेम साइज, इतनी ही होगी. वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, बट अ चेयर डज नॉट ब्रीथ. चेयर को चेयर सांस नहीं लेती. हम व्हेन इट इज़ हॉट, हम जब गर्मी में होते हैं तो इट इज़ सो अनबियरेबल फॉर अस, हमें कितना अनप्लेजेंट लगता है. और अगर एक चेयर हम गर्मी में रख दें तो क्या उसको मसला होगा? नो, चेयर को कोई इशू नहीं होगा गर्मी में, चाहे जितनी भी गर्मी में रख दें. ठीक है, बिकॉज वो सांस नहीं लेती. वी स्लीप, अ चेयर डज नॉट स्लीप. हमें नींद आती है. यस, क्या चेयर को नींद आती है? नो, अ चेयर डज नॉट स्लीप. ओके, नॉन लिविंग थिंग्स, non-living things do not grow and breathe. Yes, non-living things grow नहीं करते, breathe नहीं करते, सांस नहीं ले सकते. They do not eat and drink. They do not eat and drink. ना ही वो खाना खाते हैं and ना ही वो पानी पीते हैं. Many things around us are not alive. Do you know what non-living things are present around you? क्या आप जानते हैं आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं? येस, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स. व्हाट आर दोज? कैन यू टेल मी वो कौन सी चीज़ें हैं? येस, you can tell me. Yes. You can say this pencil. You work with this pencil, and then this eraser, we use it. Then this notebook, and what else? Your shoes, your clothes, your toys. These are non-living things. Then your tables, chairs, doors, and then a lot more things in your surroundings. बहुत सारी चीज़ें, you can find them out. आप अपने surroundings में ज़रा ढूंढिएगा कौन सी चीज़ें living things हैं, कौन सी non living things हैं. Okay, now turn over the page. पेज को turn कीजिए. Okay. Now all animals are living things. All animals are living things. Plants are also living things. जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं हमारी सराउंडिंग्स में और कहीं पे भी हों, वो सब क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज दे ग्रो एंड ब्रीथ. वो छोटे से बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं एंड सांस ले सकते हैं. प्लांट्स कैन ऑल्सो ब्रीथ बट वी कैन नॉट सी देम ब्रीदिंग. प्लांट्स भी सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, बट हमें वो नज़र नहीं आ सकते. प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड एंड वाटर. प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खाने की और पानी की भी ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि ये भी लिविंग थिंग्स होते हैं. दे टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल. दे मेक देयर ओन फूड. जो इनकी मिट्टी होती है, जिस भी सॉइल में ये होते हैं, उसमें से ये अपना वाटर लेते हैं एंड देन उस वाटर में से ये अपना फूड खुद बना लेते हैं. Some non-living things can move. A car and an aeroplane can move. कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं. क्या आप गेस कर सकते हैं? यस, कार और एरोप्लेन जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट ग्रो, ब्रीथ और ईट. पर वो ना ही छोटे से बड़े होते हैं, ना ही वो सांस ले सकते हैं एंड ना ही वो कोई चीज़ खाते हैं. दे डू नॉट इवन ईट एनीथिंग. अच्छा, बट इफ अ कार एंड एरोप्लेन कैन मूव, हु मूव्स इट? कौन इनको मूव करता है? डू दे मूव ऑन देयर ओन? क्या ये खुद चल सकते हैं? नो,
Who move then? Human beings. हम उनको चलाते हैं, हम उनकी कीज को मूव करते हैं, टर्न ऑन करते हैं, तब वो मूव कर सकते हैं. खुद से तो नहीं चल सकते एरोप्लेन एंड कार्स. सो दैट इज वाई दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. A car and an aeroplane are non-living things. Yes. And plants are living things. Can you see this picture? They grow and they breathe. Animals grow and breathe. Plants grow and breathe. अभी आप देखेंगे बहुत सारे एनिमल्स आपके भी बकरा ईद पे भी आएंगे, like cows, sheep, goats, camels and much more. So ये सब क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, बिकॉज ये मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव, वो खुद चलते हैं. यस, एंड दे ईट फूड. प्लांट्स, अभी आप देख रहे हैं प्लांट्स ग्रो. ये एक स्मॉल ट्री है, दिस इज अ स्मॉल, देन इट ग्रोज इनटू दिस साइज. कुछ दिन के बाद ये भी इस साइज का हो जाएगा. सो नाउ you have to find out the non-living things from in your surroundings and living things as well. आपने क्या करना है? What is your home task? You have to find out some 5 living things and 5 non-living things. Then make a list on your notebook and write them. Then send it to your teacher. Show it to your teacher. Okay, thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.